हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन पंजाब। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੌਪ 50 ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਟੌਪਿਕ 1 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ओके सो ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं टॉप 50 MCQs। ओके, फर्स्ट MCQ है साडे कोल, which of the following taxes is applicable in the case of supply of goods from Gujarat to Assam। एक स्टेट तो दूसरी स्टेट ਵਿੱਚ प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ लगेगा IGST। IGST stands for integrated GST। ओके, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ CGST, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ SGST ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IGST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਨ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ GST ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। IGST means integrated GST। Next MCQ है, which of the following taxes is applicable in the case of supply of services from Bihar to Rajasthan। Again, पहले आप गुड्स की गल कर रहे थे, हुण आप सर्विसेज की गल कर रहे हैं। एक स्टेट तो दूसरी स्टेट विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ टैक्स लगेगा? अगेन IGST। नेक्स्ट MCQ है, which of the following commodities is kept outside the purview of GST। फर्स्ट ऑप्शन है हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, सप्लाई ऑफ लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड एविएशन एंड टरबाइन फ्यूल। ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ C, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਲੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਲ GST ਦੇ ਐਮਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ GST ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਲੀਕਰ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। नेक्स्ट है, which of the following taxes have been subsumed in GST। ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ GST ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਊਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ GST ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਬਸਿਊਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਰਸਟ ਹੈ सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स एंड वैल्यू एडिड टैक्स। हो सकता है कई बार सानू एग्जाम दे विच ऑप्शंस दे विच कंफ्यूजन आ जाती है। सो ये तो सानू कंफर्म ही है कि वैल्यू एडिड टैक्स जिहड़ा है दैट हैज बीन सबस्यूम्ड इन GST। अदर देन दैट सेंट्रल सेल्स टैक्स भी जिहड़ा है सानू 2 ऑप्शंस विच सपोज कंफ्यूजन है कि इन्हां दोनों विच किहड़ा ऑप्शन होएगा, लेकिन सानू पता है कि वैट भी GST दे अंडर सबस्यूम कर दिता गया है एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स भी GST दे अंडर सबस्यूम कर दिता है। सो ऑप्शन इज option D, all of the above। next है GST is levied on supply of goods and services except, again first option है alcoholic liquor for human consumption, tobacco, legal services, all the above। ठीक है, so alcohol and liquor for human consumption ਜਿਹੜਾ ਹੈ GST ਦੇ ambit ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। याद रखियो कि ਜਿਹੜੇ tobacco ਦੇ products है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ excise plus GST दोनों लगते हैं। ठीक है, हो सकता है एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟobacco ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਨਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਲੱਸ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ओके, नेक्स्ट MCQ है, who shall be empowered to levy and collect GST on supplies in course of interstate transaction of trade and commerce। अगर interstate transactions हो रही है, interstate transactions के ऊपर टैक्स कलेक्शन हो रही है तो टैक्स कलेक्शन कौन करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी जॉब वर्क कैरिड आउट बाय अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऑन अनदर पर्सनस गुड्स शैल बी ट्रीटेड एज। अगर कोई भी जॉब या वर्क जिहड़ा है लेबर कर रही है किसी होर दे गुड्स दे उत्ते ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ट्रीट करांगे? फर्स्ट ऑप्शन है सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सी ऑप्शन है सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड जॉब वर्क इज कैरिड आउट विदाउट एनी मटीरियल एंड थर्ड है सप्लाई ऑफ सर्विसेज whether the job work is carried out with or without any material। so the option है option D कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ supply of goods and services या फिर ਜਿਹੜਾ work perform ਹੋ ਰਿਹਾ है is carried out चाहे वो material ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ है चाहे वो material ਤੋਂ बिना हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the threshold limit for aggregate turnover for opting to pay tax under composition scheme। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਵਾਈ ਸਕੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਵਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 75 ਲੱਖ ਫॉर ਹਿਮਾਲयन ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ 1.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ that is for any other state। ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਵਾਈ ਸਕੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ
ठीक है, सिंस पंजाब हिमालयन स्टेट भी नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी नहीं है, सो पंजाब की कंपोजिशन लेवाई स्कीम की लिमिट जड़ी होगी कितनी होगी 1.5 करोड़। सो आंसर इज ₹75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी विच तुहानू मैं दस्सिया है हिमालयन स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, okay, and 1.5 crore for any other state. Next question है input tax credit shall be allowed only on the support of ITC input tax credit केड़ी support केड़ी documents दी support तो सानू मिलेगा। फर्स्ट है डिलीवरी नोट, बी ऑप्शन है पेमेंट स्लिप, सी ऑप्शन है क्रेडिट नोट एंड डी ऑप्शन है टैक्स इनवॉइस। ਅਸੀਂ टैक्स इनवॉइस प्रेजेंट करांगे ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ITC ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ क्रेडिट रिटर्न ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है कैन पर्सन हु ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਸ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿसेज ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ नो। ओके, नेक्स्ट है who among the following is included in definition of agriculturist as defined in section 2 subsection 7 of CGST Act 2017? first option है individual, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। क्वेश्चन पूछ रहे कि जेडी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ CGST Act 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ एग्रीकल्चरिस्ट टर्म है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कौन-कौन इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ਇਹਦਾ आंसर है इंडिविजुअल एंड HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ਜਿਹੜੇ है that are a part of agriculturist as specified by section 2 subsection 7। okay, next question है as per CGST Act 2017 means distinguishable component of an enterprise that is engaged in supply of individual goods or services or group of related goods or services which are subject to risk and return that are different from those of other business verticals। other business verticals तो इलावा अगर कोई ऐसी बिजनेस है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ऐसी एक्टिविटी ਵਿੱਚ engage कर रहे हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ risk and returns ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ term ਕੀ associate ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is associated with business vertical। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर्ड पर्सन मे इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। जिन्हें भी रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर वो एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं जिदे विच सारी की सप्लाईज एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट टू ऑल सच सप्लाईज प्रोवाइडेड। कंडीशंस की है अगर तुसी एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करना है एट द एंड ऑफ द डे कि तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿसेज ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਟੈਕਸ ਇਨਵॉइस ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो इशू कर सकते हो। वो केड़े केसेस है? फर्स्ट है द रेसिपिएंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, बी ऑप्शन रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस, सी ऑप्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ पर इनवॉइस इज लेस देन 200 रुपीज, डी ऑप्शन है ऑल द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ਇਹਦਾ आंसर है डी ऑप्शन। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ पर्सन है he can issue a consolidated tax invoice for all the goods and services that he has sold on a particular day। okay, next question है amongst the following dash is empowered to levy tax on agriculture income। agriculture is a state subject। agriculture ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ state subject है तो agriculture ਤੇ लगन वाली ਜਿਹੜਾ tax है वो केड़ी गवर्नमेंट empowered है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमिश्नर और प्रेसिडेंट। आंसर इज state government since agriculture is a state subject। income tax is a professional tax, direct tax, indirect tax and service tax। it is direct tax। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ਲਈ एग्जांपल्स लर्न करने बहुत जरूरी है। indirect tax ਦੇ एग्जांपल्स ਕਿਹੜੇ ਹੈ, direct tax ਦੇ एग्जांपल्स ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ corporate tax ਜਿਹੜਾ ਹੈ it is a indirect tax or direct tax। okay, next है CBDT is controlled by central government, state government, both A and B, none of the above। it is central government। CBDT is Central Board for Direct Taxes। okay, so मैनू दसो तुसी comment section विच कि present CBDT दे chairman कौन है। okay, next question है on the supply of which of the following items GST shall be levied with effect from such date
as may be notified by the government on recommendation of the council. On the recommendation of council, government ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ ਲਿਵਾਈਵ ਕਰੇਗੀ? ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਕਰੂਡ, second is alcoholic liquor for human consumption, third is both A and B, and fourth is none of the above. Answer is C, both A and B. पेट्रोलियम एंड अल्कोहल ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ GST ਦੇ ਐਂਬਿਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਵਿਚ notification is service notified wherein whole of CGST is paid on reverse charge basis by the recipient of the service. reverse charge basis ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ recipient ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ tax pay ਕਰਦਾ ਹੈ। सो केड़ी नोटिफिकेशन दे अंडर गवर्नेंस हुंदी है? इट इज इन द नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 CTR. दिस इज द नोटिफिकेशन अंडर विच रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दे बेसिस दे उत्ते GST जिहड़ा है अप्लाई कीता जांदा है। नेक्स्ट इज GST was implemented in India from 1st January 2017, 1st April 2017, 1st March 2017 and answer is 1st July 2017. ये सब तो कॉमन डेट है जेडी यूजुअली सबनों याद रहती है। ओके, ऑल्सो इस दिन नेशनल GST डे मनाया जाता है, नेशनल GST डे। सो किस दिन मनाया जाता है? जिस दिन इनू इंट्रोड्यूस या इंप्लीमेंट किया गया इंडिया दे विच। नेक्स्ट है, इन इंडिया द GST इज अ ड्यूअल मॉडल ऑफ, ऑप्शन इज UK, Canada, USA and Japan. India जो GST model है that has been adopted from Canada. Okay. Next question है, GST is a consumption of goods and service tax based on development, dividend, destiny and destination. Answer is destination. कि suppose good Delhi to Maharashtra जा रहा है तो GST जो है that will be levied in Maharashtra. It destination based टैक्स है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर तुसी साडी वीडियोस नहीं देखियां तो वीडियोस ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीट टैक्सेशन ਜਿਹੜਾ है that has been covered for you। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज GST स्ट्रक्चर was based on how many structures? 6, 4, 3, 5। आंसर इज 4। केड़े केड़े? CGST, SGST, IGST and UTGST ਜਿਹੜਾ यूनियन टेरिटरीज तो सप्लाई ते लगदा है। याद रखना, हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ UTGST ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਨੂੰ UT ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਨੂੰ UT ਵੱਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ UT ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ UT ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ यूनियन टेरिटरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ UTGST ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is imposed। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेट ऑफ CGST इज 28, 12, 18 एंड 20। याद रखना, यूजुअली स्टूडेंट्स 28 टिक करके आएंगे क्योंकि GST दी जेडी टैक्स स्लैब्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम रेट फॉर CGST इज 20%। नेक्स्ट है, मैक्सिमम रेट ऑफ SGST एंड UTGST इज 28%, 14, 30 एंड 20। आंसर इज 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the maximum rate of CGST and IGST is 28%, 14%, 20 and 13। आंसर इज 28%। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ CGST and IGST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 28%। नेक्स्ट है, which code is used to classify goods and services under GST? फर्स्ट है HSN कोड, नेक्स्ट है SAC/HSN कोड, थर्ड है GST कोड एंड फोर्थ है SAC कोड। इधर ऑप्शन है बी ऑप्शन, SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड एंड HSN मींस हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड। ठीक है, ये कोड्स यूज होंगे हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ गुड्स एंड सर्विसेज ਨੂੰ अंडर GST क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does I in IGST stand for? I stands for internal, integrated, internal or intra। it is B option, integrated। ठीक है, नेक्स्ट है, एनी पर्सन who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or services or both but has no fixed place of business or residence in India। ऐसा पर्सन जो occasionally goods and services ਦੇ supply ਦੇ transactions undertake कर रहा है लेकिन कोई fixed place नहीं है इंडिया में जिथे वो रह के इस supply of goods and services कर रहा है, ऐसे पर्सन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? बिजनेस पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन डीलर और नॉन रेजिडेंट डीलर। इसका आंसर है नॉन रेजिडेंट डीलर। नेक्स्ट है, आउटपुट टैक्स ऑफ टैक्सेबल पर्सन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ इंक्लूड करता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म,
excludes reverse charge mechanism, includes composite tax, includes all the taxes paid. ठीक है, so the answer है B, excludes reverse charge mechanism. Reverse charge mechanism जेड़ा है, reverse charge the system है that is excluded when output tax is payable by the taxable person. Next question है supply of goods or services which constitutes the predominant element of composite scheme is called. ऐसी supply of goods and services ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ predominant element है composite supply ਦਾ, ऐसी supply ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? It is called common supply, principal supply, mixed supply or continuous supply. It is called principal supply. Next question है liability to pay tax by recipient of supply of goods or service is called output tax, reverse charge, input tax or none of the above. It is reverse charge. Usually ਜਦੋਂ tax ਦੀ ਜਿਹੜੀ amount ਹੈ that is paid by recipient of supply of goods and services, ਜਿਹਨੂੰ supply ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ tax pay ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, so that is called reverse charge. Reverse charge mechanism already ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਹੈ. Next है in GST council meeting the vote of central government shall have weightage of 1/3 of vote cast, 1/2 of vote cast, 2/3 of votes cast, none of the above. Answer is 1/3 of vote cast. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ that belongs to states share. Okay, states the share है voting ਦੇ ਵਿੱਚ, it is 2/3. Okay, so that question is repeated. In the GST council meeting, votes of the state government taken together shall have weightage of 2/3 of the votes casted. Next है tax rate on goods under GST is determined by union budget, state budget, GST council, central government in consultation with the state government. It is GST council. Tax rate जेड़ा है GST दे under goods and services दा वो कौन determine करता है? GST council. Next question है integrated goods and services tax is applicable to IGST. IGST किथे applicable होता है? All states, all union territories, whole of India, all the states except Jammu and Kashmir. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ whole of India. Earlier ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ it was not applicable in Jammu and Kashmir, लेकिन ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ system ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ mechanism ਹੈ, ਇਹ Jammu and Kashmir ਨੂੰ ਵੀ include करता है. So answer is whole of the India. Next है integrated GST is applicable on goods and services. Integrated GST goods and services ते apply होता है केड़ी imports दे उत्ते, interstate sales, export from India, import and interstate sales. Import and interstate sales दोनों दे उत्ते जेड़ा IGST है that is levied. याद रखना कि even imports दे उत्ते ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ IGST ਵੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸੇਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ IGST ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is levied. The rate of IGST is equal to the rate of IGST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? that is equal to CGST plus SGST. Okay, option है CGST, SGST, CGST plus rate of SGST, SGST plus UTGST. Answer is CGST plus rate of SGST. Next है IGST collected belongs to, जेड़ा IGST collect किया जाता है integrated GST जेड़ा है वो केड़ी government तो belong करता है? First is central government, next is to state in which supply occurs, to UT to which supply occurs, and fourth is to center and state in which the supply occurs. So answer is D. जेड़ा IGST है वो किधर तो belong करता है? Central government तो and overly state तो जिधे which supply takes place. Okay, this is where IGST belongs. Next है goods and service tax is first है supply based, second है consumption based, third है both supply and consumption based. None of the above. GST and service tax is consumption based. Point of consumption ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ it is imposed. GST was introduced, again question is repeated, 1/7/2017 ਨੂੰ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ that was introduced and it is also celebrated as National GST Day. Fact again repeated है, not a problem, ਸਾਨੂੰ याद हो जाएगा. Okay, next question है constitutional amendment 2016 for GST was. GST वास्ते ਜਿਹੜਾ 2016 ਨੂੰ which constitutional amendment ਜਿਹੜਾ introduce ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 80th, 101,
122, none of the above. Answer is B, 101 amendment. Next, incident of tax on tax is called tax cascading, tax pyramiding, tax evasion, indirect tax. Answer is tax cascading. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ already explain ਕੀਤਾ है tax on tax structure ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ tax ਦੇ ਉੱਤੇ tax ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ cascading effect work ਕਰਦਾ ਹੈ, that has been already explained. ठीक है, so incidence of tax on tax is called tax cascading, और ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ cascading effect भी ਕਹਿੰਦੇ ਆ. UTGST is applicable when sold from UT, goods are purchased by central government, sold from one UT to another UT, there is interstate supply. ठीक है, so UTGST कदों लगता है? When it is sold from a union territory, उस transaction के उत्ते UTGST लगेगा. Next है integrated goods and services is applicable when, again IGST कदों applicable होएगा? It is sold from union territory, sold from one GST dealer to another GST dealer, sold within the state, there is interstate supply. Answer is there is interstate supply. SGST is applicable when? SGST कदों लगता है? Goods are sold within the state, goods are sold from one GST dealer to the customer, goods are sold by a GST dealer to another GST dealer. Next, last option है interstate supply. Interstate supply ਦੇ ਉੱਤੇ SGST applicable ਹੁੰਦਾ है. ठीक है, next है the tax which was not merged with the GST. केड़ा केड़ा है? countervailing duty, excise duty, basic custom duty, purchase tax. Answer is basic custom duty. Next है after introduction of GST, supplies to SEZ. SEZ stands for special economic zones. Special economic zones ਤੇ GST ਦੇ introduce ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ वो कितना ਹੁੰਦਾ है? That is subject to IGST, subject to CGST plus SGST, zero rate, SGST plus CGST plus IGST. Answer is zero rate. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਟਡ. Next है the highest GST rate applicable now is 100%, 18%, 28%, 50%. Answer is 28%. Goods which get input tax credit without being liable to collect output tax. Output tax ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ collection ਦੀ ਕੋਈ liability ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ input tax credit ITC ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਹੜੇ goods ਹੁੰਦੇ ਆ? Exempt goods, white goods, sin goods, zero rated goods. Answer is zero rated goods. Last question है GST is collected by. GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ collect ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? Any registered dealer, any GST dealer, any service provider, any dealer. Answer is any GST dealer. Okay, so this was all about the 50 MCQs ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ taxation ਤੇ discuss ਕੀਤੇ ਹੈ. Thank you, have a nice day.